Hi Shankar, hi Sunil. So this interview is regarding the post of network engineer which we have right now in our organization. So I'm taking both of your interview in a single call. So my name is Suresh and I'm here working as a network architect. And can you introduce yourself now, Sunil? You go first. My name is Sunil Maiya from Jaipur. I have done BSc from MDSU University in 2023 Yeah. of CCN, CCNP Network Plus and after training I got as a network engineer. Yeah, there is some network issue. Meanwhile, can you, Shankar, 4 months, 1.4 years. yeah, I mean, let him fix his network issue. Meanwhile, can you introduce yourself, Shankar? My name is Sankarlal Bakar. I have done BSc from Jaipur National University 2022. I got training CCNA, CCNP and plus SGIT Institute in Jaipur. Okay, I currently work with an company in Jaipur. okay. Since you have been working with this company from last how many years? 1 year experience. Okay, 1 year experience. Okay. Now question for both of you guys. Uh, we have a small network, a network with 100 users. So if I ask you build it from a scratch, what device you need? You can answer in Hindi if you are not comfortable in English. So what kind of devices you need to build this network for 100 users? सर इसमें हमें डिवाइसेस बताना है क्या मतलब जैसे आईपी वगैरह वो बताना है क्या बताना Yeah, total everything. Campus I mean, you have to build. I mean, I have hired you both of you guys, and I handed over everything to you. So what will you suggest? है एंड यूजर्स मतलब 100 होने चाहिए सर Yeah, we उसके have a अकॉर्डिंग नेटवर्क है yes. Yeah. लोकल एरिया में नेटवर्क बिल्ड करेंगे सर जिसमें 10 स्विच होंगे और पीसी सर 48 पोर्ट्स वाले 3 स्विच होंगे तो 100 कनेक्ट कर लेंगे सर Okay. And what else? और उसमें पहले एक्सेस स्विच लेंगे फिर 3 टीयर 2 टीयर में ही जाएगा सर 2 टीयर आर्किटेक्चर बनाएंगे ज्यादा कॉस्टली भी नहीं पड़ेगा Right, two tier. Okay. So what do you mean by two tier? और दो तो कोर और एक Okay. If I connect to core, then I have to connect end users to the core switch. As per your design, you are saying that we need only 3 switch. If I कनेक्ट put विद okay, एक्सेस स्विच then can I connect all those 100 users in a single switch? I mean, you said two-tier आई हैव architecture. In आई two-tier, रिक्वायर्ड there should be a two core and multiple access switches. But in your scenario, you यस already सर then in your scenario you already mentioned that there should be a 3 switch. If I already make it let's say 2 switch as a core switch, then how you gonna manage with single switch? सर और स्विच अगर एक होगा तो उससे मतलब हाई अवेलेबिलिटी नहीं रहेगी लेकिन एक और स्विच एक होगा तो कनेक्टिविटी बन जाएगी एक्सेस स्विच 3 चाहिए 3 या 4 चाहिए होगा सर All right, that's right. क्योंकि एंड यूजर सारे एक्सेस स्विच से कनेक्टेड रहेंगे All right, if there are 100 users, there must be some another device like printer, biometric cameras. There are many other things. So yeah, that's fine. Okay.
Do we need VLAN in this scenario? यस VLAN यस तो सर, बनानी पड़ेगी। अलग जिस जिस टाइप के जो है, जैसे प्रिंटर का अलग विलेन बन जाएगा, सबके डाटा अलग अलग सेपरेट हो जाएंगे, जैसे लॉजिकल बना- सेगमेंटेशन होगा, फिर Okay. ब्रॉडकास्ट स्ट्रॉन्ग से बच सकेंगे। And what else? Okay, you already mentioned that we need 4-5 switches. That's okay. And what else? Do I need anything else than these 5 switches? बट सर आई डोंट अंडरस्टैंड। My question was that I told you earlier that I need a complete detail to build a network of 100 users, which you have already mentioned that 5 switches can deal with that. But do I need anything than switches, or switch will take care of those requirement? I mean, every requirement. Any other device than switches? Do I need router? Do I need firewall? Do I need access point? यस Do I सर, आई need नीड ट्रेन 5 1 firewall okay? And because do I do I firewall security concern के लिए use। okay? Do I still need, I mean, access point and router? अगर अपना नेटवर्क सर वायर्ड वाला होगा तो हमें राउटर की नीड होगी, मतलब कि लोकल एरिया में नहीं होगा, वो वायरलेस करना तो एक्सेस पॉइंट करना है। एरिया में होगा तो राउटर की आवश्यकता होगी। Okay. क्यों होगा? I can't do with firewall. तो सिक्योरिटी के क्या लिए सर? I mean, can I fulfill my router need uh, along with firewall? Why do I need a separate router for 100 user? I can do routing in firewall as well. So I just need one default route which is pointing toward the ISP. So why do I even need a router in this scenario? I will not run the BGP, I will not run the OSPF, I will not run any protocol. Then why I need a router? तो सर राउटर की आवश्यकता ना होगी, क्योंकि एक और स्विच को भी हम राउटर की तरह काम करवा देंगे सर, पाथ डिटरमाइन करवा देंगे उससे। Right. लेकिन Okay. In some scenario we needed the router, in some scenario we don't. So let's come to the again. What the IP address you will suggest for this network? I mean, I need at least 5 VLAN, 100 यूजर्स के लिए 1 transit VLAN, 1 switch management VLAN, 1 access point VLAN management. Then how many VLAN you suggest? I already give you the scenario. के लिए बनाएंगे सर 4 या 5 नेटवर्क अलग अलग बना, अगर 5 चाहिए, 5 अलग अलग डिवाइसेस के लिए तो Okay. 2 4 6 डिवाइसेस तो सर 26 सबनेट का हो जाएगा, क्लास सी का एड्रेस दे देंगे, सारे नेटवर्क आ जाएंगे 26/26 में। Okay. और उसमें सर नेटवर्क 2 की पावर 6 एक नेटवर्क आ जाएंगे उसमें सारे, और ब्लॉक साइज उसकी रहेगी 64 सर, मतलब 64 के, मतलब एक में 64 आएंगे, 64 डिवाइड कनेक्ट हो सकते हैं सर एक नेटवर्क में, तो अलग अलग डिवाइसेज, इतने ही डिवाइसेज है अपने 100 डिवाइसेज तो। Okay. Okay, Shankar, this question is for you. Do I need trunk port in this scenario? यस सर, ट्रंक विलेन को कैरी करने के लिए होगा। Okay. तो किसके बीच में बनाएंगे हम ट्रंक पोर्ट? आवाज नहीं आ रही है, कट कट के आवाज है। हाँ, अब आ रही है क्या सही?
हेलो। हेलो। हाँ अब ओके। हाँ अब आ हाँ रही आ है। रही है अब सर। किस किस के बीच में मुझे वीलेन बनानी पड़ेगी? सर कट आवाज नहीं आ रही बिल्कुल। वापस कट रही है सर आवाज। आवाज कट रही है। आवाज ही नहीं आ रही। Okay, is it better or still you you're not able to hear? क्या सर पता ही नहीं चला। Hello. पता नहीं चल रहा है। हाँ अब सर आ आप रही है। खुद ट्यूशन की आवाज कट जाती है एकदम जल्दी से बोलते। Okay, okay. अब आ रही है क्लियर? हाँ अब हाँ क्लियर आ रही है सर। हाँ अब क्लियर। Okay. So Shankar, so my question is again, I'm repeating my question again. So do I need VTP in this scenario or I can do without VTP? वीटीपी विलेन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल होता है सर, जिसमें एक पर सर्वर मोड पर हम कुछ विलेन बनाते हैं तो वो ट्रांसपेरिमेंट और क्लाइंट पर चला जाता है। Okay. और वीटीपी सर्वर मोड होता है, रिजोल्यूशन नंबर जिसका अधिक होगा वही सर्वर मोड होगा। Okay. और तो मुझे इस पे VTP बनानी पड़ेगी इस सिनेरियो में। मेरे पास 5 स्विच है तो VTP की जरूरत हाँ है मुझे। वीटीपी की तो सर जिस पर कोर स्विच पर है इन पर तो बनाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इन पर तो चलती नहीं है। वीटीपी एक्सेस स्विच पर ही काम करती है, क्योंकि लेयर 2 पर ही काम करती है वीटीपी। अच्छा, कोर स्विच पे नहीं बना सकती इसका मतलब? हाँ कोर स्विच पर नहीं बना सकते सर मेरे हिसाब से। ओके, बना सकते हैं, कोर पे ही बनाते हैं ना, दोबारा रिवाइज करना इसको। पर सर छोटे छोटे नेटवर्क है तो वीटीपी बनाएंगे तो भी चल जाएगा सर, और नहीं भी बनाएंगे तो भी अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं सर। ज्यादा ना बड़ा नेटवर्क है नहीं हमारा तो। राइट राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डोंट नीड VTP इन दिस सिनेरियो। अगर है भी तो कोर पे ही हाँ बनाते हैं VTP मोड सर्वर को। सर्वर हम VTP का सर्वर बनाते कोर हैं। पे हाँ ही सर रखते वीटीपी को, हाँ हैं। कोर पे और एक्सेस दोनों पे। Okay. क्योंकि सर ये वीटीपी तो लेयर 2 पर ही काम करता है वो। नहीं नहीं सारे स्विचेस पे बना सकते हैं सर, L3 और L2 पे, क्योंकि हाँ विलन की कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा L3 वाली ट्रांसफर करनी होती है सर। राइट। ओके, डू यू डू यू हैव अंडरस्टैंडिंग in any of dynamic routing protocol? डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल लाइक ओएसपीएफ, रिप्स। Okay, उसमें अलग अलग है आई है सर, लिंक स्टेट, लिंक स्टेट पाथ और वेक्टर के आधार पर। वेक्टर। okay, what is difference between distance vector and link state? लिंक स्टेट में तो पूरे टोपोलॉजी का पाथ का पूरा पता लगा लिया जाता है, और डिस्टेंस वेक्टर में अपने अगले वाले राउटर तक ही उसका पता लगाया जा सकता है, हेड में अपने वाले गेटवे तक। Okay, हाँ ओनली नेपर्स का पता रहता है सर, डिस्टेंस डिस्टेंस पाथ वेक्टर में। okay, okay. What is the administrative distance of OSPF by default? ओएसपीएफ 110। Can we change हाँ that? 1 ये सर रिडिस्ट्रीब्यूट करके चेंज कर सकते हैं सर, अलग अलग ऑटोनोमस सिस्टम को अगर ओएसपीएफ हमारा नेटवर्क बना होगा तो उसके रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वो चेंज हो जाएगी बाय डिफॉल्ट। हाँ Right. Okay. Okay. In this scenario, I mean, as I mentioned, we have 100 users in this scenario.
We have a Yes, sir. 2 core switch, Yes. 3550. Okay, so which high availability method I can use? Can I use सर समझ stacking? नहीं है. I mean, which high available method I can use for redundancy of network? So can I use stacking in 3550? The switch model is 3550. So in this switch model, can I use stacking? Can I use FHRP protocol? Can I use any other redundancy protocol like VRRP or JLB? FHRP प्रोटोकॉल. सर HSRP FHRP प्रोटोकॉल करेंगे सर. उससे Okay. वर्चुअल नेट राउटर बना देंगे सर. उससे HSRP अलग यूनिक आईपी. Okay, HSRP यूज में करेंगे सर. stacking नहीं कर सकते? स्टैकिंग में सर HSRP में अपने को कॉन्फ़िगरेशन करके बना सकते हैं, लेकिन स्टैकिंग में अपने को केबल सही होगी. स्टैकिंग केबल और कॉस्टली रहेगा अगर HSRP इजी रहेगा. Okay. Okay, what is by default hello timer of HSRP version 2? 3 सेकंड और मैक्सिमम 10 सेकंड. That उसका is not 3 गुना होता है maximum. सर. That is not maximum time. That is hold down time. ऑल टाइम सर. मिनिमम. HSRP is Cisco proprietary or open standard? Cisco proprietary. इसको प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल्स. Okay, what is the port number of SMB? किसका? क्या सर? What is the protocol port number of SMB protocol, server message block? SMB. Server message SMB. block. का सर बनता SMP बनता 24. Four, four, five. Okay. Okay, next question. Okay, I have a SNMP server which is on far side. Let's say I have a 2 office. One office, this is 100 user where I am sitting right now, and there is another office which is in Delhi, and I have connected both sides via VPN, and the VPN termination point is the firewall. From this firewall to that firewall, I have a VPN tunnel. So I need my device to be monitored. So which port number should I open on the firewall? Make sure the SNMP communication is happening between both sides. SNMP के पोर्ट नंबर ओपन रखें सर 161 और 162. हाँ, वो Right. मैनेजमेंट के लिए होती है. जो सर्वर और एजेंट के लिए 100 तो सर्वर के लिए होते हैं, एजेंट 162. SNMP से मैनेज कर सकते हैं. Right, right. Have you ever worked? मॉनिटर कर सकते हैं सर SNMP. Have you ever worked on SolarWind? Yes sir. Okay. Can you add a device in SolarWind via SNMP version 3? कैसे समझा नहीं मैं. If I give you a switch and a SolarWind server, Yes. can you add that switch Yes, into sir. SolarWind via SNMP version 3? Yes sir. कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं वर्जन 3 में SNMP. हाँ, वो हैशिंग और इनक्रिप्शन के लिए यूज लिया जाता है. Okay, good. Okay, what is the difference between SNMP version 2C or version 3? वर्जन 1 और 2 में सर इंक्रिप्शन नहीं होती है. वर्जन 3 में इंक्रिप्शन होती है. पासवर्ड भी वर्जन 1 और 2 में इंक्रिप्टेड नहीं रहता है. वर्जन 3 में इंक्रिप्टेड रहता है. और डाटा इंटीग्रिटी का सर बैकरेज में वर्जन 1 में अवेलेबल नहीं होता, लेकिन वर्जन 2 और 3 के अंदर मतलब एप्लीकेशन लेयर पे इंटीग्रिटी का रहता है सर Okay, right. मैकेनिज्म.
Okay. मैसेज So टेक्स्ट क्लियर होता है इसमें दोनों होता है और उसमें इंक्रिप्शन रूम में होता है। right. वर्जन So 3 हैशिंग और एन्क्रिप्शन दोनों प्रोवाइड करवाती है सर। हाँ right. Okay. Another question is that I have a one server as VTP server, Yes. which is core switch, and I created VLAN 4090. 4090. I've created VLAN 4090 on core switch and I turn on VTP. Will that VLAN carried by VTP to the access switches? यस सर, 4094 को कैरी कर लेगा, 4095 को मतलब वो रिजर्व रहता है सर, ऐसे ही 4094 को कैरी कर लेगा सर हाँ Okay. क्लाइंट्स पर। Revisit this topic and check. क्या सर? Revisit this topic. I mean, it cannot Correct. carry. It cannot carry. Only it carry normal VLAN. It cannot carry extended VLAN range. Sorry sir, I don't have knowledge of this. Okay, so if I let me give you a subnet, a network 192.168.10.0. I need 7 network out of this network. So can you give me that 7 network? 7 network तो सर पावर 7 चाहिए इधर 2 की पावर 3 2 की पावर 3 8 3 मिनट और तो 5 24 5 29 स्लेस में मिल जाएगा सर, CIDR वैल्यू 29 पे। और नेटवर्क सर I need 7 network, not host. I need 7 network, 7 नेटवर्क right? 8 2 की पावर 3 8 नेटवर्क 8 भरे होगा सर 8. Okay, then 7 how many bits do I have to borrow from network host segment? How many bit I have to borrow from host segment? और सेगमेंट के लिए कितने बिट बरोबर है? 7 2 की पावर 5 मतलब कि 2 की पावर 3 कितना होता है? 8 ही होता है सर मतलब 8 क्या सर ये So 2 की power 3, which means how many bits I have borrowed from host segment? सर ये क्वेश्चन समझ नहीं आता कितने नेटवर्क वाला सर। 3 नेटवर्क sir, तो ये 8 और slash इसके हो जाएंगे 27, 2 slash 27, right? 27 24 3 में हो 3 जाएगा हाँ सर 27 हो जाएगा। 224 हो जाएगा Okay. Why I need a gateway? गेटवे गेटवे पिंग करने के लिए पिंग नहीं होगा गेटवे के बिना Why do I need सर gateway? डाटा सर पैकेट को गेटवे के थ्रू एक ये आईपी उसको एड्रेस होता है जिसपे ही पहला पैकेट मतलब पैकेट वो पहले वहीं पे जाता है सर गेटवे, इसलिए गेटवे दिया जाता है। Right. But why, if I do not provide gateway, what will happen? Will it still आगे communicate? हाँ नो सर, विदाउट गेटवे कम्युनिकेट नहीं करेंगे सर, कोई भी पिंग ही host? नहीं होगा वो कोई भी होस्ट।
विदाउट गेटवे L2 पे तो सर होता है सर, L3 जहाँ पे L3 नेटवर्क का जहाँ पे आ जाता है ना सिनेरियो, तो वहाँ पे नहीं होता सर। Okay. We need a gateway to communicate with a different network, with a different subnet. That's why we need a gateway. सर डिफरेंट नेटवर्क को कम्युनिकेट कराने के लिए। Okay. If I don't have to go in another network, then I can communicate without the gateway. I don't need the gateway. सेम नेटवर्क में गेटवे की आवश्यकता नहीं होती सर। No, we don't. Yes. Okay, what is subnet mask? सबनेट मास्क के बड़े नेटवर्क को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना सबनेट कहलाता है। That is बड़े subnetting. नेटवर्क को छोटे छोटे, That is subnetting. What is subnet mask? सबनेट मास्क कीजिए हम्म, होस्ट आईपी एड्रेस। होस्ट एड्रेस होता है सर जो 225 मैक्सिमम सेगमेंट को, एक ऑक्टेट का मैक्सिमम आईपी होती है सबनेट मास्क 225 हाँ वो तो क्लास के रूम में होती है, क्लास M1 225 होते हैं 80.0 होती है। Okay, like why we need the gateway? We need a gateway to communicate with different subnet or different network. Why we need subnet mask? अलग अलग क्लास को रिप्रेजेंट कराने के लिए सर। सीआईडीआर वैल्यू होती है, सीआईडीआर वैल्यू का जितनी सीआईडीआर वैल्यू होती है उसके अकॉर्डिंग होता है No, सर there is सबनेट मास्क। no relevancy between classes and subnet mask. Okay, what is DNS? डीएनएस आईपी के थ्रू डोमेन नेम के थ्रू आईपी एड्रेस को फाइंड करता है। इसका पोर्ट नंबर 53 होता है। ये टीसीपी और यूडीपी दोनों पर वर्क करता है। It always work on UDP. There's some हाँ cases when we need to transfer zone between the DNS server, then it will use TCP. Okay, what is DHCP? टीसीपी प्रोटोकॉल ऑटोमेटिक आईपी पर लेता है और ये डोरा प्रेशर काम करता है। इसका पोर्ट नंबर होता है 6768 होता है। सर्वर और क्लाइंट का होता है 67, सर्वर का होता है और क्लाइंट का होता है 68। Okay, और ये डोरा प्रोसेस पर काम करता है। what is DORA? डोरा डिस्कवर रिक्वेस्ट ऑफर वे एक्नॉलेजमेंट। इसमें डिस्कवर होता है जो ब्रॉडकास्ट करता है, ऑफर वो यूनिकास्ट करता है, रिक्वेस्ट वापस ब्रॉडकास्ट करता है, एक्नॉलेजमेंट यूनिकास्ट करता है। Okay, Sunil, is that true? सर पहला डोरा प्रोसेस में पहला मैसेज डिस्कवर मैसेज आता है जो Okay, क्लाइंट से सर्वर के पास जाता है, जिसमें आईपी के लिए रिक्वेस्ट की जाती है कि भाई आईपी दो, ऐसे डोरा डिस्कवर okay. मैसेज आई सर्वर फाइंड करता है पहले। फिर Will this ऑफर मैसेज be आता है सर। always this way? Will be always this way? I mean, there would be a second message request, right? नहीं ऑफर Offer, all right, offer. So सेकंड मैसेज ऑफर, will this message will be always broadcast or unicast? ऑफर मैसेज यूनिकास्ट सर, In all the रिक्वेस्ट मैसेज cases? ब्रॉडकास्ट। In all the हाँ cases? रिक्वेस्ट मैसेज ऑफर मैसेज, यस सर ऑल द केसेस, क्योंकि यूनिक अपना एक पीसी डिवाइसेस अपने मतलब उससे करता है, ऑफर डिस्कवर मैसेज भेजता है तो उसे ऑफर एक को ही मिलती है सर आईपी। No, that is not true in all the cases. In some cases, it's right. It's I mean, you can say this would be a unicast, but not in all the cases. There would be some instance where offer message would be a unicast, and in some cases it would be a broadcast. It's depend upon client, what client has requested. Okay, सर ब्रॉडकास्ट किस कहाँ पे हो सकता है, मतलब किस कंडीशन में हो सकता है ब्रॉडकास्ट, the client किसी किसी कंडीशन when में? client ask when I mean when discover message sent by client will tell the DHCP server that when you revert to me,
Give me as a unicast or broadcast. Client tell to the server. Depend on that request, server will either will it will be broadcast or unicast. Depend on client request. Yes, sir. Okay. Okay, thank you. Thank you for giving your time. Thank you, sir.